बोल नहीं रहा No, था, no, you डर must, के मारे? no, no, किस no, no. लिए? You must understand that I am a part of the government. My party believes that when you're a part of an alliance, then if you have any issues, you must raise those issues indoors. And I have raised these issues at several occasions indoors. I have gone up to the chief minister, spoken to him about it. I have met the prime minister, I met the honorable home minister, everybody. But we did not go into the media because we are an ally. We have a duty to, talk inside and resolve the issues. But despite our repeated efforts, somewhere the issues did not get resolved. However, I have spoken again now, and I am being assured that they will be resolved, and I hope they are. But when things linger on for too long, they do have an impact. And I mean, we all. So when at that time you said बंद कमरों में ये बातें हुआ करती थी, चाहे लखनऊ में हो या फिर दिल्ली में हो, आपने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन अब why are you going public with it? What is the difference? क्योंकि ऑपोजिशन जो है, जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा दुकान बंद होने से अनुप्रिया पटेल योगी जी को पत्र लिख रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अलायंस के रूप में मेरा दायित्व यही था कि मैं बंद कमरे में मसलों को उठाऊं, और मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने इन मसलों को सेंट्रल लीडरशिप के सामने उठाया, इसलिए 2022 के चुनाव के पहले एडिशनल सीट्स क्रिएशन इसका नोटिफिकेशन भी हुआ। तो सेंट्रल लीडरशिप ने इंटरवीन किया, बंद कमरे में हमने बात की, सेंट्रल लीडरशिप ने इंटरवीन किया, तभी एडिशनल सीट्स आई। लेकिन फिर वो मसला कोर्ट में जाके फंस गया। अब तब तक 2022 का चुनाव खत्म हो चुका था। कोर्ट में जब मसला फंसा तो स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता था कि आप उसको परस्यू करें, आप उसका समाधान निकालें, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए 2024 के पहले कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय व्याप्त था, एक रिजेंटमेंट था कि आप हमारे लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब इसके परिणाम आए तो वो सुखद नहीं रहे। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि भाई हम आपसे बहुत समय से कह रहे हैं और आपको अब इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन ने इसका फायदा उठाया है। Opposition has taken advantage of this opportunity and hurt the interest of the NDA alliance in the general elections. It's true that we have been able to form a government in a row for the third time. Despite what happened in Uttar Pradesh. Yes, despite what happened. But somewhere, because of this mistake that we made, that we did not address the issue after 2022 elections were over, somewhere it impacted our Lok Sabha results. So, whatever is not going on track, it is the moral duty of the government to address the grievances of the people. And I stand for my people, I stand for the weaker sections. So, if there is something which is not on track, I can't stay mum. I have to raise their voice. See, when you talk about the weaker sections, lots of people and say... yes, one more thing. जी. You said Samajwadi Party is saying दुकान बंद हो रही है. I would like to answer to them also. My critics have a moral duty to perform. My critics are just doing their job. They are saying दुकान बंद हो रही है. मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने critics को I cannot expect them to say otherwise. And say otherwise what? That Anupriya Patel had her feet so much in the ground that despite all your fake narrative and your false propaganda, you could not expel Anupriya Patel from Mirzapur, and Anupriya Patel resides in the hearts and the minds of the Mirzapurians. So that is my reply to my opponents.